Okay, now each one of you might have seen an Excel sheet, right? So what is an Excel sheet? It is, say, a row column kind of structure. What is row column kind of structure? You generally call it as a table, right? And in a table, what do you have is you have, say, a few headers or headings, right, or the names of the columns, right, and then you have different rows, each row filling a column. For example, let us take an example of table of students, right? So we'll have uh, one field as id, which is student id, then we'll have another field as roll number, third field as name of student, then fourth field can be students marks, right, fifth field can also be college, right? So we can have five such fields, right? So five such columns, right? I'll just make them bold. Right, next, now what you do is this id field, I am calling it id because it is an identifier for the student, right? It is just an identifier for the student. Roll number is also an identifier, but id can also be an identifier, right? So I'll tell you an example wherein this id would be used. Then what is the next thing that you do is you fill in these fields. The name, let's say abc, right, marks say 80, and college say ycc. Then you fill in another field id, another row means roll number 2, and this is def, marks say 70, and colleges say pce, right? Then another field is 3, roll number is 3, name is ghi, right, marks maybe 65, right, svp. Then 4, again 4, jkl say 90, right, and some vnit, right? Now what you can observe in this is that if I select this column, if I select this column, that is abc, right, what is say the significance of this column? What you can simply say is the name of a student, right? In the first row it is abc, right? The college of student is ycc, and his marks are 80, and his roll number is 1. That is what you can identify, right? So what it means is that the names of the columns, they are not repeated. The names of the columns, they are not repeated, right? Another important thing to note is that these fields, right, they contain uh, values specific to these columns, right? So this particular column, if we say, it will always contain identifier, this column will always contain roll number, this column will always contain name, this would contain marks, this would contain college, right? Now instead of 90 here, right, if I give gg, right, so it is an odd man out. Why is it an odd man out? Can you tell me? Yes, can you tell me why is this field an odd man out? Just type in here so that I'll be able to listen properly. Type in the chat window so I'll be able to listen and reply to you properly. So my question is that in this particular table, in this Excel sheet, right, I am seeing that this particular column, which is F7, right, it is an odd man out. Why is it an odd man out? It is not an integer, right? So why should this be an integer? Because they are marks, right? And generally you have marks in integer or in numbers,
right? To be more specific, it should be in numbers, right? So what it specifically, or if I give VNIT 1, so is this VNIT 1 and odd man out? Yes or no? No, it is not. Why? Because this is just a name. So name can be one, name can contain 1 to 3, means name can contain numbers also. Right? Now this identifier, specifically this one, right? This is of type, you can say integer, or you can say it is a number. Roll number, again you can say it is integer. Now roll numbers need not necessarily always be integers, right? They can also be in other formats as well, like A1, A2, A3 sort of, right? But that's okay. Right? Now this particular thing, name, right? Name, it is alphanumeric. Name is alphanumeric, right? So what we call them is, we call them strings. So it is of the type string. What is marks? Again an integer. What is college? Again it is a string, right? So what this thing, this particular row is signifying is that, okay, this particular column, it will contain the value of the type integer. This will contain value of the type integer. Name, value of the type string. Marks, value of the type integer. College, value of the type string. String मतलब अभी के लिए just keep in mind that string would mean any set of alphanumeric characters, right? And it can contain some special characters as well, right? So you can say that that is a string as of now, right? Then another important thing to note is each row, each row represents a unique student. Am I correct in saying this? Each row represents a unique student. Am I correct in saying this? Yes. Right? So let us say that if your college, let us say that if your college, it contains say 1000 students, right? So what would it mean? That your rows would start from this column or this particular number 4, row number 4, and it will go till 1004. Am I correct in saying this? So what does not repeat is the names of the columns. तो ये कॉलम के जो नाम है, कॉलम के जो नाम है, राइट, दे डू नॉट रिपीट, राइट? कॉलम का काम क्या है? कॉलम का काम ये है कि ये सिग्निफाई करना कि उस कॉलम में क्या एंट्री रहेगी, कौन से टाइप की एंट्री रहेगी, और वो किस चीज़ को पॉइंट करती है, किस चीज़ को रेफर करती है. जैसे दिस पर्टिकुलर कॉलम रेफर्स अ कॉलेज and it has a data type string. This particular column refers marks and it has a data type integer. Now what is a data type? Data type मतलब what type of data would be stored. At the end Excel का काम क्या है? Excel का काम है डेटा को स्टोर करना, राइट? एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना. दैट इज द जॉब ऑफ, बेसिक जॉब ऑफ एन एक्सेल, राइट? देन यू कैन अप्लाई फिल्टर्स ये सब अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि लेट अस से देर आर 1000 स्टूडेंट्स हियर इन दिस एक्सेल, राइट? ऐसा एज्यूम करके चलो कि 1000 स्टूडेंट्स है. अब इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ YCC, राइट? तो आप क्या करोगे? यू वुड सिंपली सर्च इन दिस पर्टिकुलर कॉलम कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज YCC है, right? So there can be many students who have college YCC, right? So what you are doing here is you are searching in this particular column. That is what you are doing here, right? Also marks, let us say ये marks percentage है, let us say ये marks जो है these are marks percentage, यानी percentage marks है, right? And ये instead of GG, right, if I give here 120, is this correct?
No. Why is it not correct? बिकॉज परसेंटेज जो है वो हम लोग 100 में से पकड़ते हैं मार्क्स में हमेशा, राइट. दैट इज वाई इट इज नॉट करेक्ट. सो लेट मी मेक इट 90. राइट. नाउ अनदर थिंग, ये जो नेम है, राइट, JKL, लेट्स से इफ आई डिलीट दिस नाउ, ये स्टूडेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उस स्टूडेंट को कोई नाम ही नहीं है. सो कैन अ स्टूडेंट एग्जिस्ट विदाउट अ नेम? No, right? A student cannot exist without a name. Am I correct in saying this, that a student cannot exist without a name? Right? तो स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम हमेशा होना चाहिए, right? So that is what you can say, that is what signifies a data. That is what is signifying a data. तो एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो आप कैसे करते हो? आप कॉलम्स को नाम देते हो, राइट, एंड फिर वो कॉलम्स के अगेंस्ट हर रो में वैल्यू भरते हो, राइट. दैट इज व्हाट यू डू एंड दिस इज व्हाट अ डेटाबेस डज. दिस इज व्हाट अ डेटाबेस डज. तो डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस में आप टेबल्स बनाते हो. डेटाबेस में आप टेबल्स बनाते हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन द डेटाबेस. एंड व्हाट इज द सेकेंड थिंग दैट यू डू इन द डेटाबेस? कि एक बार टेबल्स बन गए फिर वो टेबल्स में आप वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करते हो, राइट. दैट इज व्हाट यू डू इनसाइड अ डेटाबेस. यहां तक इज इट क्लियर? यस. प्रचित, प्राजक्ता, इज इट क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? ये तो सिंपल ही था, नथिंग, नो रॉकेट साइंस इन दिस. ओके, ग्रेट. राइट, नाउ लेट अस डू द सेम थिंग इन अ डेटाबेस. राइट, नाउ लेट्स से मैंने ये एक वर्क बेंच जो है वो ओपन किया. आई विल क्लोज ऑल दीज थिंग्स. राइट. नाउ MySQL क्या है? MySQL एक सॉफ्टवेयर है, राइट, जो कि हमें डेटाबेसेस बनाने देता है, जिसमें हम लोग डेटाबेसेस स्टोर करते हैं, राइट. नाउ एवरी एप्लीकेशन कैन हैव अ सेपरेट डेटाबेस एंड MySQL अलाउज यू टू क्रिएट डिफरेंट डेटाबेसेस. अलग अलग डेटाबेस, अलग अलग स्कीमा MySQL आपको बनाने देता है. जो भी डेटाबेस आप बनाते हो वो आपको यहाँ पर स्कीमा जो ये टैब है यहाँ पे मिलता है, राइट. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल क्रिएट अ डेटाबेस and we'll give a name to that database, right. The name of that database is students DB, a very simple database. So how will I create that? I'll say create database students DB, right, and I give a semicolon. Then next what I do is कि ये तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा. To execute this statement I'll select this and I'll click on this flash icon. यहाँ जो ये दिख रहा है ना contacts के नीचे में, ये वाला, right. I'll press on this icon. तो इसने मुझे एरर दिया, cannot create database student DB. okay, database exists because ये नाम का डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी है, right. So I would say students DB1 instead of students DB. Right, now again I select this, I run this, right. तो यहाँ पर नीचे में उसके लॉग्स आते हैं, right. ये लॉग्स अगर ग्रीन हुए, यहाँ अगर ग्रीन रहेगा, right, what it means is that statement executed successfully. That is what it would mean. Next is if you observe here nothing is visible here. ये students DB पुराना है. Now if I click on this refresh button, राइट, यू कैन सी कि यहाँ पर एक स्टूडेंट्स DB1 नाम का डेटाबेस बना है. ये स्कीमा में आपको दिखेगा, राइट. स्कीमा क्या है? स्कीमा इज नथिंग बट यू कैन कॉल इट एज अ डेटाबेस, राइट, विच विल कंटेन अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स,
टेबल्स क्या है, जैसे हमने एक्सेल में टेबल देखा वैसे ही हम लोग डेटाबेस के अंदर में वी कैन क्रिएट टेबल्स. दैट इज व्हाट अ टेबल इन अ डेटाबेस इज, राइट. सो as you can see, the database students db1 is created, right, but it does not have any table. ये blank है, कुछ नहीं है tables में, right. So next what I am going to do is I am going to tell MySQL that I have to use students db1. तो यूज़ क्या करता है, ये बताता है कि नेक्स्ट मेरे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स db1 डेटाबेस के लिए एग्जीक्यूट होंगे. नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am going to create a table student, and that table will have the following fields: ID, roll number, name, marks and college, right. ये 5 fields उसमें रहने वाले, right. So यहाँ ध्यान दो कि इसका syntax कैसा है, right. So I will start creating a table. So I will say create table and then next is table name. So I will call it student, right. Now in this student I give a parenthesis and a semicolon at the end, and inside this parenthesis now I start defining my fields. So very first field is ID, right, and what is the data type of that field? Data type of that field is integer. तो यहाँ ID, then I give space and I type int, I give a comma. Next, what is the next field? It is RNO. Again its data type is integer, so I will say RNO, again type is int, comma. Third is name, right, and its data type is string. String मतलब क्या कि it can contain a combination of any characters as well as alphabets as well as special characters, right. So that is what is a string. So to represent a string in MySQL, right, we have a data type called as varchar, right, and you can specify the limit of that varchar कि ये name maximum कितने characters का हो सकता है. So I'll say 20 या 30. What it means is that the name can be of maximum 30 characters. Next is marks and its data type is integer. So I'll give the column name as marks and I'll say int. And next is college and its data type is again a string. So I'll say college and I'll say varchar maybe 20 or 30 AB. Right, so that is how I would be creating the table whose name is students. Right, so to execute is, ये तो मैंने सिर्फ लिखा, इसे execute करना है तो I'll select this, right, and I'll click this flash icon. Right, so it says 0 rows affected, but so long as it is green, this particular statement has executed successfully. अभी भी यहाँ tables में आपको कुछ नहीं दिखा, तो वो कब दिखेगा? When you refresh. So if you refresh, अब आप ये tables को expand करोगे तो आपको students ये दिखेगा, right. अब कोई भी table जो बना है, उस table के columns अगर आपको देखने हैं, तो there is another statement which is called as describe. If I select this, I run this, तो you will get all the columns, वो table के सारे columns जो है वो आपको दिखेंगे. ये null की default extra क्या है, let us not worry about it right now, right. अभी के लिए एक table create हुआ और उस table में ये सारे columns हैं, right. ये DESC वो काम करता है, right. Now to view, अब ये table बना मतलब क्या बना? Table बना मतलब सिर्फ ये इतना, ये दोनों चीज़ें हुई कि आपने कॉलम्स कौन से हैं टेबल में ये डिसाइड किया और हर कॉलम का डेटा टाइप कौन सा है ये आपने बताया. अभी तक हमने टेबल में कोई भी रो जो है वो ऐड नहीं करी है, राइट. नाउ टू फेच द डेटा इन द स्टूडेंट्स, टू फेच द डेटा फ्रॉम दिस टेबल स्टूडेंट्स, राइट, what we need to do is we need to write queries, right. Specifically we will be writing select query. So I will say select star from students. I will select this and I will click on flash icon. तो as you can see कि एक ऐसा टेबल स्ट्रक्चर आपको दिखा
जिसमें सारे कॉलम्स आपको दिख गए, लेकिन रोज में आपको कुछ भी नहीं दिखा. रोज आर ब्लैंक. वाई आर द रोज ब्लैंक? रोज आर ब्लैंक because we have not inserted any data into the students table. We have not inserted any data into the students table, right? So to do that, what I'll do is I'll write an insert statement. Insert statement is used to insert the data into a table, right? So I'll write it like this. I'll say insert into students क्या है? The name of my table. Then space, then I'll give parenthesis, and in these parentheses I'll write the column names. So I'll say id comma rno comma name comma marks comma college, right? ये कॉलम नेम्स जो आपने यहाँ दिए हैं वैसे ही होने चाहिए, राइट? ये कॉलेज को कॉलेज 1 करोगे तो एरर देगा, राइट? बिकॉज टेबल ऑलरेडी बना हुआ रहता है. इसके बाद आई वुड से वैल्यूज. वैल्यूज में what is the first field? It is id, right? id should be an integer, so I'll give value, let's say 1. What is the second field? Roll number. Again it is an integer, I'll give value 1. Third field is a name, right? And what is name? The data type of name, it is varchar, मतलब वो एक string है, right? तो whenever you have to insert data into a varchar data type वाला field या column, तो you have to give it in single quotes. So I'll give दो single quotes, उसमें I'll write say ABC, right? Then next column we have is marks, which is an integer, I can say 60, right? And next column is college, which is again a varchar. I'll again give single quotes, and inside single quotes I'll give the college name. Once this is done, right, ये statement मैंने लिखा. Now I will execute this. So I'll select this, I'll click on the flash icon. Again this is green, it says 1 row affected. Excellent. Now data तो चले गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो data हमको दिखा नहीं है अभी तक. So to view that data in tabular format, what we have is we have to execute this query. Select star from students. So I'll select this statement and I'll click on flash icon. Right, now you'll be able to see some data in this particular table. Next is, what I'll do is I'll insert few more data. So what I'll do, I'll copy this statement from here, right, and I'll paste it here. 1 2 3, and I'll change the values. I'll say ये 2, this is 2. ABC के बदले I'll say DEF. Mark 60 के बदले 70, right? YCC के बदले PC. Then I'll say this is 3, this is 3, right? DEF के बाद ये GHI, right? Marks are say 80, and college again let us give it YCC, and this one is 4, this one again 4, this is say JKL, this is 90, and you can give college as some ACET, right? Now I can execute 3 statements at a time as well. तो मैंने क्या किया, तीनों statement को एक साथ select किया, and I am clicking on this flash icon. So it says 1 row affected, 1 row affected, 1 row affected. मतलब तीनों statement execute हो गई, तीनों green है, no issues. Now to view that data, I'll select this statement. I'll say select star from students. I'll click on flash icon. Right, I should be able to see all the data which has been inserted. अगर तुम अच्छे से देखोगे तो चारों rows जो है वो insert हो चुकी है. Right, so what we have seen today is we saw that we created first a database. How did we create a database? We created a database using create database command. So I am saying create database, then the name of the database. You can give any name that you want, but for simplicity give the same name, students db1. Then I am saying
यूज़ स्टूडेंट्स DB1। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे डेटाबेसेस बनाए हैं, राइट। तो क्वेरी जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो कौन से डेटाबेस पे होनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स DB1 पे होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यूज़ स्टूडेंट्स DB1। देन व्हाट डिड आई डू, आई क्रिएटेड अ टेबल स्टूडेंट्स। क्रिएट टेबल का सिंपल सिंटैक्स है, इट इज़ क्रिएट देन टेबल एंड देन द नेम ऑफ द टेबल। उसके बाद वी गिव पैरेंथेसिस and inside parenthesis we give comma separated fields or columns, right। तो ये id rno जो है ये आप, these are the names of your fields or the names of your columns, right। and along with columns what you specify is that what type of data will be stored in those columns, right। integer रहेगा या varchar रहेगा, right। integer के लिए we use int and for strings we use varchar, right। and inside varchar we give a number which specifies maximum कितना डेटा उसके अंदर रह सकता है। दैट इज़ व्हाट ये ब्रैकेट के अंदर का नंबर इट डिस्क्राइब्स, राइट। देन ये टेबल क्रिएट करने के लिए या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू select that statement and click on the flash icon. If I run this again, this will give me an error. See, I execute this again. इसने मुझे एरर दिया, रेड मतलब एरर। व्हाट इट सेज दैट टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब स्टूडेंट्स नाम का जो टेबल है ऑलरेडी हमने बना लिया है। तो एक डेटाबेस या एक स्कीमा के अंदर आप एक ही नाम के दो टेबल नहीं बना सकते, राइट। सो योर टेबल नेम्स हैव टू बी यूनिक फॉर वन पर्टिकुलर स्कीमा, right। that is important thing, right। then the next what we have done is कि अगर ये टेबल का स्ट्रक्चर आपको जानना है, ये हमने क्या किया, टेबल बनाया, राइट। यानी उसको एक स्ट्रक्चर दिया टेबल को कि कौन से कॉलम्स रहेंगे और उनका डेटा टाइप क्या रहेगा। फिर हमने क्या किया, हमने उस टेबल को डिस्क्राइब किया, DSC स्टूडेंट्स। तो डिस्क्राइब करने से हमें क्या मिला, हमें मिला कि वो टेबल में कौन कौन से फील्ड्स है, हमें ये मिले, कौन कौन से कॉलम्स है ये मिले और उनका डेटा टाइप मिला। ये सारी चीज़ें छोड़ दो अभी के लिए, राइट। हमें ये चीज़ मिली, राइट। उसके बाद अगर हमें वो टेबल की रोज़ जाननी है तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स किया। उससे हमें वो टेबल में कितनी रोज़ है, कौन कौन सी रोज़ है वो मिल गई, राइट। डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया। insert into students, then we gave column names, then values, and then we gave the values to that column, to those columns, right। ये हमने किया।